हाय स्टूडेंट्स, आपने बचपन में मतलब कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस tan cot sec cosec। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ कंडीशन फॉर द इनवर्स टू एग्जिस्ट। ओके, मैं हूं आपका मैथ मेंटर कौशल अजोग्या एंड योर फ्रेंड। सो स्टे ट्यून फॉर द फुल लेक्चर ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सो लेट अस से वी हैव टू सेट्स x एंड y। तो सेट x में 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, और सेट y में भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं a, b एंड c। अभी एक रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं r फ्रॉम x टू y and there are the ordered pairs in the relation. We have 1 comma a, 2 comma b and 3 comma c। अभी इसका एक मैपिंग डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा, हमको देख लेते हैं। सो दिस इज x एंड दिस इज y। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3 एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a, b, c। मैपिंग डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सो 1 इज एसोसिएटेड विथ a, 2 विथ b एंड 3 विथ c। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या दिख रहा है कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, और कौन से टाइप का फंक्शन दिख रहा है हमको? वी कैन से दैट इट इज अ 1, 1 फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ x इज यूनिकली एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट इन y। तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट f बी अ फंक्शन मूविंग फ्रॉम x टू y। सो ये पता चल गया कि f 1, 1 फंक्शन है। और सो y में आपको ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है जो कि x के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। सो हम लोग ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि f इज 1, 1 एंड ऑन टू। तो 1, 1 भी है, ऑन टू भी है। ओके, तो अब उसके डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज डोमेन ऑफ f? डोमेन मतलब एलिमेंट्स ऑफ द सेट x। तो हमको आ जाएंगे यहाँ पे 1, 2 एंड 3। एंड रेंज मतलब एलिमेंट्स ऑफ द सेट y। सो यू आर गोइंग टू गेट योर a, b, c। ओके, तो ये हो गया r की बात हो गई फ्रॉम x टू y। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इनवर्स ऑफ r विच इज डिनोटेड बाय r इनवर्स। तो r इनवर्स मूव करेगा फ्रॉम y टू x। ओके, सो लेट अस से r इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम y टू x। तो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना बच्चों, वो हमको कैसे मिलेंगे पता है? वो मिलेंगे हमको r में से ही बाय इंटरचेंजिंग द x एंड द y कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे अगर 1, a है ना, तो हम लोग यहाँ पे r इनवर्स में क्या लिखेंगे पता है? वी आर गोइंग टू राइट डाउन a, 1। तो x एंड द y कोऑर्डिनेट्स आर स्वैप्ड। लाइकवाइज यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? 2, b, अरे सॉरी, b, 2। देन द थर्ड एलिमेंट वी आर गोइंग टू गेट इज c, 3। ओके, तो इसका भी मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं, पूरा लग जाएगा बेचारे को। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे? y, फिर लिखेंगे x। अभी y के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन कर लो, जो कि है a, b, c। यहाँ पे d, e, f, अरे सॉरी 1, 2, 3। Okay, now if you complete the mapping diagram, A is related with 1, B with 2 and C with 3। वापस हम लोग वही बोलेंगे कि ये रिलेशन जो आपको दिख रहा है वो 1, 1 है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ फंक्शन। कौन से टाइप का फंक्शन दिख रहा है? 1, 1 फंक्शन। तो और एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। क्या जाता है अपना? सो लेट G बी अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। तो वो 1, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो वापस वही लिख दो, G is 1, 1 and on to function। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ G क्या है बोलो? डोमेन ऑफ G इसमें क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द सेट y। सो यू आर गोइंग टू गेट योर a, b एंड c एंड द रेंज ऑफ G इज गोइंग टू बी 1, 2, 3। तो अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन f था उसका जो डोमेन था वो इसका रेंज है, और इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन है। ओके, सो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शंस। तो जहां पे डोमेन और रेंज स्वैप हो जाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट G इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ f। ये बहुत दूर लिख दिया, इनवर्स ऑफ f। ओके, सो वी कैन से दैट G इज इक्वल टू f इनवर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ कम्स द कंडीशन फॉर द इनवर्स टू एग्जिस्ट। अभी ध्यान से देखो
ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, तब जाके इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अभी मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, मैं जो सेट x है ना उसमें एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे और एक एलिमेंट आ गया 4, और मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर रहा हूँ 4, C। तो मैपिंग डायग्राम अगर कंप्लीट किया हम लोग ने तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको। सो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन विल नाउ f बी, वो अभी 1 1 फंक्शन नहीं है, वो बन गया मैनी टू वन फंक्शन। ओके, इट्स अ मैनी टू वन फंक्शन। सो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे इन द आर इनवर्स हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, तो और एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा C, 4। फिर यहाँ पे मैपिंग डायग्राम में सेट x में और एक एलिमेंट ऐड हो चुका है, तो जब भी इसको प्लॉट किया तो हमको क्या मिल रहा है, देखो we have obtained a one to many relation and we know that one to many relation is not a function। तो अभी जो g है वो आपका फंक्शन नहीं रहता है, okay, it does not exist। Therefore students, I hope you have understood कि for a inverse of a function to exist it is very very necessary that f has to be 1 1 and on 2, तब जाके inverse exist होगा। I hope students ये आपको समझ में आ चुका है। Now अभी हम लोग आगे चलते हैं, let us discuss the domain and range of sin inverse। Stay tuned। So students, I have a good news for you। अगर आपने डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स अच्छे से समझ लिया तो बाकी के जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे उसके डोमेन एंड रेंज आप खुद मुझे बताओगे। इट इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, सो प्लीज अच्छे से ध्यान दो। सो लेट्स बिगिन। As we can see over here, we have two graphs, y equal to sin x and y equal to sin inverse x। Let us first focus on y equal to sin x। तो पहले देख लेते हैं how to plot a graph। So on the x axis we are taking angles in terms of multiples of pi by 2। तो हमको angles मिलेंगे 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and so on। And on the negative x axis we are going to get minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and so on। Now we are going to plot the graph by getting the corresponding values of y। Means x के values put करते जाओ, sin 0 you will get 0, sin 90 you will get 1, sin pi you get 0, sin 3 pi by 2 you get minus 1 and so on। Likewise on the negative x axis, sin minus pi by 2 you get 1, sin of minus pi you get 0, sin of minus 3 pi by 2 you get 1 and so on। So what do we observe that sin x is an infinite graph। Okay, so what is the domain of this graph now? Domain means the possible values which x can take। So as we can see, since it's an infinite graph, the domain is R। And what is range of this graph now? Range मतलब corresponding values of y। So इसका जो range बनेगा वो है between -1 to 1। So the range of sin x is between -1 to 1। Now students, what do we observe is ये जो ग्राफ है वो many to one फंक्शन है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज ऑफ y। जैसे कि sin pi by 2 वी आर गेटिंग 1, sin of minus 3 pi by 2 also we are getting 1। So it's a many to one function। But अगर इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट करना है तो इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द डोमेन। सो व्हाट डू वी डू इज वी फॉर्म विंडोज। ऐसे विंडो बनाते हैं जैसे कि उसमें -1 to 1 के बीच में सारे वैल्यूज कवर हो जाते हैं। सो द फर्स्ट पॉसिबल विंडो एज वी कैन सी इज -3 pi by 2 to -pi by 2। सो अगर हम लोग ने एक विंडो ये ले लिया तो वी आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 विच विल सेटिस्फाई द रेंज। Another possible window we can see is -pi by 2 to pi by 2। So we are getting all the values between -1 to 1। Likewise, we are getting infinite windows। But for simplicity, we restrict the domain interval as -pi by 2 to pi by 2। Okay students, so just for simplicity, let us keep in mind that the domain of sin x is now -pi by 2 to pi by 2। Okay, now let us come to y is equal to sin inverse x। पहले तो देख लेते हैं कि how to plot this graph। So just now we have seen how to plot an inverse of a function। Just interchange the x and the y coordinates। तो यहाँ पे x एक्सिस पे आपको एंगल्स दिख रहे थे और y एक्सिस पे वैल्यूज दिख रहे थे। I mean the numbers between -1 to 1। So here on the x axis you are going to get numbers between -1 to 1 and on the y axis you are going to get the angles which are multiples of pi by 2। So ये आपको समझ में आ गया इतना। Now let us plot the graph। So the 0, 0 remains 0, 0। Now this point which was corresponding to pi by 2, 1 वो यहाँ पे क्या होगा 1, pi by 2 हो जाएगा because we have swapped the elements of x and y। So here you are going to get 1, pi by 2 which is this point। This point pi, 0 in sin x corresponds to 0, pi in sin inverse x। This point 3 pi by 2, -1 corresponds to -1, 3 pi by 2 on sin inverse x।
I hope students you are getting this. Okay, so this is the way we plot the graph y equal to sin inverse x. Now if you talk about the domain of this graph, तो इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा. ओके, सो द रेंज ऑफ sin x is -1 to 1, so the domain of sin inverse x is -1 to 1. Clear students? Now the restricted domain intervals were, these are the possible restricted domain intervals. So यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे? Possible range intervals. Okay student, but we have restricted the domain to this particular window. So here the restricted window what we are going to get is -π/2 to π/2, and that students we called as principal value branch. तो यहाँ पे बहुत सारे रेंज पॉसिबल है, agreed, but since we have restricted the domain to -π/2 to π/2, here the principal value branch जिसको बोलेंगे वो हो जाएगा -π/2 to π/2. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द डोमेन एंड रेंज ऑफ cos inverse x. Students, finding the domain and range of cos inverse x is going to be much more simpler. So let us see. So again we have two graphs students, y equal to cos x and y equal to cos inverse x. Let us first focus on y equal to cos x. So along the x axis we are taking angles which are multiples of π/2. So we get 0, π/2, pi, 3π/2. On the negative side you get 0, -π/2, -π, -3π/2 and so on. So let us find the values of cos for corresponding angles. We know that cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos pi is -1, cos 3π/2 is 0, and along the negative side we have cos of -π/2 is 0, cos of -pi is -1, cos of -3π/2 is 0, and so on. So what do we observe students? Ki y equal to cos x extends infinitely along the x-axis. So what can you say about the domain of cos x? So domain means the possible values x can take, and we clearly observe that x is taking values between -infinity to infinity. Therefore the domain of cos x is set of real numbers. Okay, what can you say about the range of cos x? So we can see that values of y are varying between -1 to 1. So the range of cos x is y is equal to -1 to 1. Okay students, now what do we observe is this graph currently is a many to one function, because we are getting same values of y for lot many points on x-axis. जैसे कि cos 0 is 1, cos 2π is 1. So we are getting multiple values of x for which we get the same values of y. So therefore this is a many to one function. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको restrict करना पड़ेगा to 1 function. So for that we take the help of windows. So the first window we form is -π to 0, which will satisfy the range. That is, it will give you the values between -1 to 1. Also it is going to become a 1 function for this window. Another window possible is 0 to pi. तो 0 to pi हमको सारे values देंगे between -1 to 1, and also the cos x is going to be 1 function. So students, what do we observe is there are infinite such windows possible. So as a standard we choose 0 to pi as a domain for cos x. For the cos x to become a 1 function, we choose 0 to pi as the domain. Now let's move to cos inverse x. Now students, let us first understand how to plot y equal to cos inverse x. Now since this is the inverse of cos x, so the elements of the x and the y, मतलब the coordinates of x and the y are going to be swapped. So x axis पे जो angles थे वो अभी y axis पे आ जाएंगे, और y axis पे जो values थे -1 to 1 वो अभी x axis पे आ जाएंगे. Okay, so now let us plot the corresponding points. So at 0 we know that this point corresponds to 0, 1. So यहाँ पे भी ये पॉइंट हो जाएगा अभी 1, 0. So 0, 1 corresponds to 1, 0. Then let us take the next point. π/2, 0 will correspond to 0, π/2. Then pi, -1 will correspond to -1, pi. I hope students now you can make out how to plot the graph of y equal to cos inverse x. Now students, can you tell me the domain of cos inverse x? Domain means the possible values of x. So what do we observe that on the x-axis the values are varying between -1 to 1. So the domain for cos inverse x is -1 to 1, जो कि range of cos x था. Okay students, now possible restricted domain intervals were this. So this is going to become what? Possible range intervals. Okay, but we had chosen 0 to pi as a standard domain. So we are going to choose 0 to pi as a range of cos inverse x, and that is known as principal value branch.
Okay students, I hope you have understood the domain and range of cos inverse x. Let's move ahead to find the domain and range of tan inverse x. Okay students, so again we have two graphs with us, y equal to tan x and y equal to tan inverse x. Now let us understand the graph y equal to tan x. So on the x-axis, as we can see, we are taking angles in multiples of pi by 2. So 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and so on, and minus pi by 2, minus pi. So we very well know the value of the tan function at all these angles. So tan 0 is 0, tan 45 is 1, tan 60 is root 3, and that is the way you get a graph of y equal to tan x. So now let us talk about the domain of the tan function. Students, what is a domain according to you? Domain यहाँ पे क्या होगा बोलो आपके हिसाब से? इट इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. लेकिन डू वी सी दैट द tan फंक्शन अप्रोचेस इंफिनिटी एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. जैसे कि tan 90 पे इट इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, tan 3 पाई बाय 2 इट इज अप्रोचिंग इंफिनिटी. सो एट दैट पॉइंट इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 फ्रॉम द डोमेन. सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रियल सेट माइनस 2n plus 1 times pi by 2 where n belongs to integers. Okay, so what we have done is we have eliminated the odd multiples of pi by 2 from the domain. So now let us talk about the range. So what is the range according to you? It is the set of all the real numbers from minus infinity to infinity. Okay, so we can say the range is R. Now students, what do we observe is this graph y equal to tan x is a many to one function currently. Okay, so what do we do is we take the help of windows. So windows हम लोग possibility क्या क्या है देखो. We can take a window minus pi by 2 to pi by 2 which will make this graph a 1 function. Also it will satisfy the range. We get all the values of the range minus the set of all the real numbers. Likewise दूसरा window possible है pi by 2 to 3 pi by 2. So we get all the set of real numbers. Okay, so these are the possible restricted domain. तो हम लोग domain को ये intervals पे restrict कर सकते हो. Okay, so now as a standard we are choosing minus pi by 2 to pi by 2 as the domain of tan x. Okay, so now let us come to tan inverse x. So how to plot the graph of tan inverse x? Let us see. We know that we are going to swap the coordinates of x and y. तो यहाँ पे x एक्सिस पे एंगल्स थे, तो यहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यूज आ जाएंगे और y एक्सिस पे एंगल्स आ जाएंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू प्लॉट द ग्राफ. सो let us assume this is pi by 4 comma 1. So this point will correspond to 1 comma pi by 4. Then let us assume that this point is pi by 3 comma root 3. So this point will correspond to root 3 comma pi by 3. And this is the way you get the graph y equal to tan inverse x. Now students, can you tell me the domain of this graph? Domain मतलब possible values x is taking. So we can easily see that the domain is the set of real numbers. Okay, so domain of tan inverse x is set of real numbers जो कि इसका रेंज था. Now यहाँ पे जो आपने restricted domain intervals लिए थे वो बन जाएंगे यहाँ पे possible range values. Okay, so we can see over here कि domain जो है R set of real numbers. So these are the possible range intervals we can choose minus pi by 2 to pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2 and so on. So we get the possible range values as this. But since we have chosen minus pi by 2 to pi by 2 as a standard domain, so we are going to select this range as a range of tan inverse x, and that is called as principal value branch. So I am going to write down here. It is minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so that becomes the principal value branch of tan inverse x. I hope students you have understood tan inverse x. Let's move ahead with cot inverse x. Okay students, so cot inverse के बारे में आप मुझे बताओगे. Okay, let us assume that we have plotted the graph. Now we are going to talk about the domain and range. Please tell me what is the domain of the graph y equal to cot x. बोलो, what are the possible values cot function can take? So if you are thinking in your mind set of real numbers, you are absolutely correct. So यहाँ पे r लिख देंगे, लेकिन at certain points the cot x approaches infinity. वो कौन से पॉइंट्स है मुझे बताओ. So are they multiples of pi? पाई पे इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, 2 पाई पे इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो वो पॉइंट्स को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे डोमेन में से. तो वी आर गोइंग टू से इट इज मल्टीपल्स ऑफ पाई एंड n बिलोंग्स टू z. सो योर डोमेन इज r माइनस मल्टीपल्स ऑफ पाई where n बिलोंग्स टू z. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज. रेंज मतलब y कौन से वैल्यूज ले रहे हैं. ओके, सो वी कैन इजीली सी दैट y इज टेकिंग set of all the real numbers, that is minus infinity to infinity. So your range is r.
ओके नाउ स्टूडेंट्स करंटली दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन. तो हम लोग क्या करते हैं, वी फाउंड विंडोज. प्लीज टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल विंडोज यू आर गोइंग टू सिलेक्ट so that the graph y equal to cot x becomes one function. बताओ पहले विंडो के बारे में बताओ. So are you thinking minus pi to 0? You are absolutely correct. Okay, so first possible window is minus pi to 0. Second window क्या हो जाएगा, 0 to pi. Third window is going to become pi to 2 pi and so on. Okay students, but as a standard we select 0 to pi as a standard domain. Okay, now let's come to cot inverse x. Please observe the graph and tell me the domain of this graph. अभी आपको ये पता ही है कि x एक्सिस पे एंगल्स था तो यहाँ पे y एक्सिस पे एंगल्स आ जाएंगे और y एक्सिस पे वैल्यूज था तो यहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यूज आ जाएंगे. So now please tell me what is the domain of this function cot inverse x. So if you are thinking it is a set of real numbers, you are absolutely correct. और दूसरा हिंट देखो ना, इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा. ओके नाउ प्लीज टेल मी द पॉसिबल रेंज इंटरवल्स पॉसिबल ओवर हियर. रेंज इंटरवल्स कौन से पॉसिबल है. ओके सो वी आर गोइंग टू गेट द पॉसिबल विंडो इज माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई एंड सो ऑन. सो यहाँ पे जो पॉसिबल डोमेन इंटरवल्स थे वो यहाँ पे पॉसिबल रेंज इंटरवल्स हो जाएंगे. तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर. द फर्स्ट विंडो पॉसिबल इज माइनस पाई टू 0, 0 to pi, pi to 2 pi and so on. So these are the possible ranges cot inverse can have. But since we have selected 0 to pi as a standard domain, तो यहाँ पे हम लोग जो रेंज सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, 0 to pi, and that is going to become your principal branch for cot inverse x. So I am going to choose 0 to pi as my PVB for cos inverse x. Okay students, let's move ahead. Okay students, so अभी हम आ चुके हैं cosec inverse x पे. So again हमारे पास दो ग्राफ है, y equal to cosec x and y equal to cosec inverse x. Let us talk about the domain of cosec x. Students carefully observe and tell me what possible values x can take. So if you observe, x can take any real numbers along the x-axis. लेकिन you have to eliminate those points where cosec x approaches infinity. तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वो 0 पे infinity अप्रोच कर रहा है, पाई पे infinity अप्रोच कर रहा है, माइनस पाई पे माइनस infinity अप्रोच कर रहा है. Okay, so what do we conclude that domain can be set of all the real numbers, but we have to eliminate multiples of pi where n belongs to z. I hope students you are clear with the domain. Now let us talk about the range. Range मतलब possible values y can take. So यहाँ पे ध्यान से देखोगे, so again it is taking all the set of real numbers, लेकिन it is not taking values between one interval. Which is that interval students? ध्यान से देखोगे तो cosec x कभी भी -1 to 1 के बीच में values नहीं लेगा. Okay, so what we can conclude that the range for cosec x is r minus values between -1 to 1. I hope students you are clear. Okay, now we can say that this is a many to one function. तो हम लोग इसको one function बनाने के लिए हेल्प लेंगे विंडोज की. So can you tell me the first window possible which will satisfy the range of cosec x as well as it will going to become one function. So if you carefully observe, we want the values from -1 to -infinity and we want the values from 1 to infinity. Okay, so first possible window is minus pi by 2 to pi by 2. So I am going to write down here minus pi by 2 comma pi by 2. लेकिन उसमें cosec 0 is not defined. So between this interval minus pi by 2 to pi by 2 we have to eliminate the point 0 क्योंकि cosec 0 is infinity. So can you tell me the next window possible? It is pi by 2 to 3 pi by 2, but it will not include the point pi because it approaches infinity at that point. So your next window possible is pi by 2 to 3 pi by 2 minus pi. I hope students you are clear with the possible windows. Now as a standard we are selecting this window as the domain of cosec x. Okay students, let's come to cosec inverse x. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एंगल्स यहाँ पे x एक्सिस पे थे तो यहाँ पे along the y एक्सिस हो जाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज along the y एक्सिस थे तो यहाँ पे वैल्यूज along the x एक्सिस हो जाएंगे. So carefully observe the graph and can you tell me the domain of this function? Domain मतलब possible values of x. So we will focus along the x axis. So now tell me the values x can take. So again you are going to say it is a set of all the real numbers, लेकिन it will never take the value between -1 to 1. ये values वो कभी भी नहीं ले रहा है. Okay, so we can say that the domain of cosec inverse x is r minus -1 to 1. And for simplicity we can just say इसका जो range था वो इसका domain है.
और यहाँ पे जो आपको पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इंटरवल्स मिल रहे थे वो हो जाएंगे पॉसिबल रेंज इंटरवल्स. तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन पॉसिबल रेंज इंटरवल्स आर -π/2 to π/2 minus the point 0. Then another window we have is π/2 to 3π/2 minus pi, and so on. So there are not many ranges possible, okay, but as a standard we have chosen this as a domain, so we are going to choose this as the range for cosec inverse x, and that becomes your principal value branch. So I am going to write down here -π/2 to π/2 minus the point 0. I hope students you are clear with the graph cosec inverse x. Let's move to the last one, sec inverse x. So students, if you have understood the domain and range of cosec inverse x, this thing is going to be a piece of cake for you. So let us begin with y equal to sec x. ध्यान से ग्राफ ऑब्जर्व करो and tell me the domain of sec x. If you carefully observe, x can take any real numbers except those points where sec x approaches infinity. तो ध्यान से देखोगे तो infinity approach करता है π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे. So what do you conclude? It approaches infinity at odd multiples of π/2. So we are going to say your domain is set of real numbers, लेकिन we will eliminate the odd multiples of π/2. So it is r-2n plus 1 times π/2 where n belongs to z. Now let's talk about the range. Range मतलब possible values sec x is taking on the y-axis. Okay, so if you observe, it can take a set of real numbers, लेकिन again like cosec x, it is not taking the values between -1 to 1. Okay, so the range is r minus -1 to 1. Clear students? Now since this is a many to one function, सेम प्रोसीजर करते हैं, विंडोज फॉर्म करेंगे जिससे कि रेंज भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये फंक्शन भी 1 हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉसिबल विंडो वी कैन चूज इज 0 to π. देखो उससे फायदा क्या होगा, 0 to π में हमको 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज मिल जाएंगे एंड वी विल ऑल्सो गेट द वैल्यूज फ्रॉम -1 to -infinity. ओके स्टूडेंट्स, तो द फर्स्ट पॉसिबल विंडो वी कैन चूज इज 0 to π माइनस वी हैव टू एलिमिनेट द पॉइंट π/2 क्योंकि वो पॉइंट के ऊपर sec π/2 डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, नेक्स्ट पॉसिबल विंडो इफ यू सी इज फ्रॉम π to 2π, but we will eliminate the point 3π/2. So next we are going to write down π to 2π, लेकिन we are going to eliminate the point 3π/2 and so on. So we get infinite such windows, but as a standard we choose this window as the domain for sec x. So now let us come to sec inverse x. Again x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे अभी वैल्यूज आ जाएंगे, ओके, एंड y एक्सिस के ऊपर हमको एंगल्स आ जाएंगे. ओके, नाउ केयरफुली ऑब्जर्व एंड टेल मी द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ. डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज x can take. So as we can see, it can take all the real numbers, but it is never going to take values between -1 to 1. So what is your domain for sec inverse x is r minus -1 to 1, which is same as the range of sec x. ओके, अभी यहाँ पे जो पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इंटरवल्स थे वो यहाँ पे पॉसिबल रेंज इंटरवल्स हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट पॉसिबल रेंज इंटरवल इज 0 to π, लेकिन वी आर एलिमिनेटिंग द पॉइंट π/2. सेकेंड पॉसिबल विंडो इज फ्रॉम π to 2π, लेकिन वी एलिमिनेट द पॉइंट 3π/2 एंड सो ऑन. सो वी गेट इनफाइनाइट रेंजेस ऑफ sec inverse x, बट एज अ स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू चूज दिस एज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. So we are going to get the principal value branch of sec inverse x is 0 to π minus π/2. Okay students, I hope you are clear with the concepts of domain and range of 6 inverse trigonometric functions. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Take care and goodbye.